हाय एवरीवन। इस क्लास में हम स्टैटिस्टिक के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आपको दिया गया है कि 8 बॉय है, 4 गर्ल है, इसे 12 स्टूडेंट्स हैं और आप 3 स्टूडेंट की कमिटी फॉर्म कर रहे हो, राइट। यहाँ पे इम्प्लिसिटली आपको अज्यूम करना है कि ये जो 3 स्टूडेंट आप पिकअप कर रहे हो वो रैंडमली कर रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा भी है कि यूनिफॉर्मली एट रैंडम आप 3 स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हो और आपको एक स्पेसिफिक इवेंट दी गई है विच इज कंटेनिंग दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेट। दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर सेट में 2 बॉय होंगे और 1 गर्ल होगी, राइट। सो ए इज अ इवेंट दैट एग्जैक्टली 2 बॉयज एंड 1 गर्ल इज पिक, राइट। सो एक्चुअल में आपका एक्सपेरिमेंट है कि यूनिफॉर्मली आप पिक करो, बट आप एक स्पेसिफिक इवेंट में इंटरेस्टेड हो विच इज सेइंग दैट 2 बॉयज एंड 1 गर्ल विल बी पिक। सो उसे इसको नाम दिया गया है ए, राइट। सो आप इस एक्सपेरिमेंट को आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हो। दैट मीन्स आप कोई भी 3 स्टूडेंट को रैंडमली पिक कर रहे हो उसमें से। n equal to 120 टाइम एंड लेट ऐसे डिनोट द सैंपल प्रपोर्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन विच इवेंट ए अकर्स। यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए। देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सैंपल प्रपोर्शन, राइट। हाउ डज इट डिफाइंड? द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम event A occurred in your experiment, और more precisely आपने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया? n इक्वल टू 100 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया, 120 टाइम्स एक्चुअली, 120 एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहली चीज नोट करने की है यहाँ पे कि एस ऑफ ए इज ऑल्सो अ रैंडम, राइट। दैट मीन्स कि आप 120 एक्सपेरिमेंट आज कर रहे हो, राइट। 120 सैंपल्स ले रहे हो, वो सेम 120 सैंपल्स आप कल ले रहे हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग एस ऑफ ए की वैल्यू आज जो आएगी और कल जो आएगी नीड नॉट बी सेम। इट डिपेंड्स on the sample that you choose. स्टैटिस्टिक में ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी और एक्चुअल रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि पिकिंग द 3 स्टूडेंट्स रैंडमली, राइट। दैट इज योर अंडरलाइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, फिर आप कुछ सैम्पलिंग करते हो और कुछ सैंपल अचीव करते हो। तो सपोज मैंने 3 स्टूडेंट्स लिए, है ना, और उसका 120 बार उसे रिपीट किया, राइट। आई विल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। आपने स्टूडेंट्स का एक सेट बनाया, फिर दूसरा सेट बनाया, राइट, लाइकवाइज। ऑल दीज आर कॉल्ड एज अ सैंपल्स, बिकॉज आपने जो अंडरलाइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो मल्टीपल टाइम रिपीट किया और उसका सैंपल्स आपने अचीव किया। सो दीज आर सैंपल्स। नाउ देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज अ रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू द सैंपल्स दैट यू आर ऑब्जर्विंग, राइट। बिकॉज जैसा मैंने कहा कि जो आप सैंपल्स ऑब्टेन कर रहे हो आर नॉट अ डिटर्मिनिस्टिक एंटिटी, और that itself is a random quantity, right? So we can define a random variable corresponding to some measures of the samples. इस particular scenario में आपको measure दिया गया है which is a proportion or a fraction of the times event A occur हो रही है, right? So इस samples में से आप कुछ measure define कर सकते हो which is some deterministic quantity. But as you change the sample,
एज यू चेंज द सैंपल, सो सपोज आपने 120 सैंपल आज अचीव किए, फिर 120 सैंपल कल अचीव किए, राइट? सो ऐसा आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हो, अगेन आप इससे ही सैंपल बना सकते हो. तो the corresponding measure that you are defining will itself be different for all of them, which is in this case the measure that we have defined is the proportion of the samples where event A occurred. ठीक है? So all of this might have a different assay, right? SFA क्या है? द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम्स इवेंट ए अकर्ड. सो यहाँ पे 120 मैंने एक्सपेरिमेंट ऐसे लिए. बट ये 120 सैंपल्स आज लिए कल लिए ऐसे मल्टीपल टाइम्स आप लोगे, तो एस ऑफ ए विल बी डिफरेंट. सो एस ऑफ ए इटसेल्फ इज अ रैंडम क्वांटिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको ये चीज़ एकदम क्लियर समझानी है, राइट? आप सैंपल ले रहे हो तो उसकी वैल्यू फिक्स हो जा रही है, राइट? ओरिजिनल रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है इट सेल्फ इज अ रैंडम क्वांटिटी, दैट इज ऑब्वियस. सैंपल ले रहे हो मतलब आपने एक बार सैम्पलिंग की और कुछ आपने वैल्यूज अचीव ऑब्टेन की, दैट इज अगेन फिक्स क्वांटिटी. बट इफ यू डिफाइन सम मेजर ऑन द सैंपल, राइट, दैट इट सेल्फ इज अ रैंडम, बिकॉज आप आज सैंपल्स लोगे कल सैंपल्स लोगे, ऑल दिस विल गिव यू डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स. इसे स्टेटिस्टिक्स भी बोलते हैं. सो दिस इज 120 सैंपल्स. सो एक सैंपल आज लिया है, एक सैंपल कल लिया है, इस तरीके से, ठीक है? सो एस ऑफ ए इट सेल्फ इज अ रैंडम क्वांटिटी. दैट इज फर्स्ट थिंग आई नीड टू एक्सप्लेन यू. तो अभी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ दिस रैंडम क्वांटिटी एस ऑफ ए. सो एस ऑफ ए इज अ फ्रैक्शन ऑफ द टाइम्स इवेंट ए अकर्ड हो रही है जो आपने 120 सैंपल्स लिए. सो एक्चुअली एस ऑफ ए को फ्रैक्शनली कंप्यूट करने की जगह मैं एक दूसरी क्वांटिटी डिफाइन करता हूँ एन ऑफ ए, विच इज ऑल्सो रैंडम, विच इज जस्ट सेइंग दैट नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ए अकर्ड इन योर 120 samples, right? So this itself is a random, okay? But there is a nice formula between them. S of A is just a n of A divided by 120, right? ठीक है? सो फर्स्ट थिंग इज टू कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ एस ऑफ ए, और मोर प्रिसाइसली लेट्स से आई विल कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ एन ऑफ ए, है ना, और उस पर से मुझे वेरिएंस ऑफ एस ऑफ ए मिल जाएगा, राइट? बिकॉज कोई भी मल्टीप्लायर से आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट? तो हमने देखा था कि वेरिएंस आप जो कैलकुलेट कर रहे हो वो स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है. मोर प्रिसाइसली वेरिएंस ऑफ दिस क्वांटिटी S of A is same as a 1 by 120 whole square, right? Variance of N of A. ठीक है? तो अभी मुझे वेरिएंस ऑफ N of A कैलकुलेट करना है. तो आप देख रहे हो कि जो सैंपल्स आप ऑब्टेन कर रहे हो, you will have to basic assumption है स्टेटिस्टिक का, जो the various samples that you are obtaining itself are independent, right? तो फर्स्ट टाइम आपने जो 3 स्टूडेंट रैंडमली पिकअप किए, और सेकंड टाइम आपने 3 स्टूडेंट रैंडमली पिकअप किए, थर्ड टाइम आपने 3 स्टूडेंट रैंडमली पिकअप किए, ऑल दीज आर रैंडम इंडिपेंडेंट थिंग्स, राइट? मतलब द choices made in the first
sample does not affect the choices made in the subsequent samples, right? So all these are random quantities. This is very basic thing that we assume in the statistics. So when here n of a is what? You can just say that it is just a sum of indicator random variables. More precisely, sum of 120 indicator random variables, which says that the corresponding sample is from the event A or not. That means कि उसमें दो boy and एक girl है कि नहीं, right? So n of a is just a indicator random variable. मैं 1 इसे दर्शाता हूँ, है ना? 1 subscript 1. This I'll define what it is. Don't worry. 1 subscript 2. So 1 subscript I is defined in this way. It will give 1 if ith sample that you do, वो itself is a random quantity, right? So sample आप observe कर रहे हो, उसके बाद तो आपके पास एक number आ गया. But when you are sampling, you can also define the corresponding probability and all those things. So all these indicator variables are random quantity, right? So this is 1 if ith sample is from event A, more precisely उसमें 2 boy and 1 girl है. And 0 होगा otherwise. So अभी मैं probability की बात कर सकता हूँ, right? What is the probability that कितनी probability से वो उसमें से event 1 में से आएगा कि नहीं? So let me ask you, what is the probability of 1 of I for all any I? So it doesn't matter. So what is the probability of 1 of I equal to 1? Right? So हमने देखा था कि random variable taking some value can be seen as a certain event. So 1 of I equal to 1. This itself is a event. And what is the corresponding probability? वही मैं basically ask कर रहा हूँ. So this is same as आपके ओरिजिनल रैंडम एक्सपेरिमेंट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, क्योंकि आप एक बार सैंपल कर रहे हो और जो वैल्यूज आ रही है. सो दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम नेचुरली डिफाइन कर सकते हैं. हमने काउंटिंग पढ़ा है. सो यूजिंग दिस काउंटिंग फॉर्मूला फॉर अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और जहाँ पे सारे ही आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी सेम है, वी कैन राइट इट एज अ नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इन एंटायर रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है. So how I can define the number of outcomes in A? So आप event देख रहे हो. So what are the outcomes in this entire experiment? First of all, outcome is some collection या फिर combination of 3 people, right? So any outcome is a collection of 3 people. So outcome is a collection of 3 people. Three students. So A में कितनी आउटकम्स है? हम मल्टीप्लीकेशन रूल से इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो यू कैन अप्लाई द मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल हियर. फर्स्ट थिंग इज दैट आपको 2 बॉय पिकअप करने हैं. दैट इज अ वेरी फर्स्ट डिसीजन, राइट? जो हमने मल्टीप्लीकेशन काउंटिंग का प्रिंसिपल पढ़ा है. हाउ मेनी वेज यू कैन पिकअप द 2 बॉयज फ्रॉम द 8 बॉयज? 8C2. सो दिस इज 8C2. And how many ways you can pick up 1 girl from the 4 girls, which is 4C1, right? And this is something that we have obtained using the multiplication principle of the counting.
You can also calculate ऐसे कितने total outcomes होंगे. Every outcome is a collection of 3 students. So आपके पास 12 students हैं. So number of total outcomes or size of the entire sample space is I'll just write this size of the omega, cardinality of the entire sample space. 12 आप कितने चूज कर रहे हो? 12 में से 3 चूज कर रहे हो, तो 12 से 3. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमें मिल गई यूजिंग दिस फॉर्मूला 8C2 मल्टीप्लाइड बाय 4C1, राइट, डिवाइडेड बाय 12C3. Now once you have this probability, you calculate whatever the answer you get here. You can calculate the probability of 1i equal to 1 कितनी होगी. You can just calculate it. But I am not interested in probability of 1i equal to 1. I am more interested in the variance, right? क्योंकि ultimately मुझे variance calculate करना है. So हमने देखा था कि all these indicator random variables are independent, right? So what we can say about the variance of sum of the random variable and variance of the individual random variable, right? उसके corresponding हमने formula भी निकाला था, right? So since 1i and 1j are independent, what you can say about the variance of this entire n of a random variable जो है उसका just a variance of the individual random variables, sum of the variance of the individual random variables, right? हमने 120 तक किया है. Please know here, this is a random variable, right? Don't get confused. So variance of 1i is just see 1i is a Bernoulli random variable, right? वो one value लेगा जब probability of a event occur होगी, right? This is same, right? A event occur हुई, then it will take a one value, otherwise 0. So this 1i is a Bernoulli random variable and I know the formula of a Bernoulli random variable. ठीक है. So what is the formula of Bernoulli random variable? Right? अगर Bernoulli random variable p probability से value 1 ले रहा है, the formula of variance is p times 1 minus p. यहाँ पे probability of a probability से वो 1 value ले रहा है. So the variance का formula क्या बन जाएगा? 1 to 120 probability of a multiplied by 1 minus probability of a. This is something that you obtain. ठीक है. So now plug this in this original formula. We are interested in variance of S of a. Right. So that is given by this formula. Right. And यहाँ पे मैं 120 सीधा लिख देता हूँ because there is no I in this entire equation, right? So I can just multiply 120 with this term. So this is multiplied by 120 probability of A multiplied by probability of 1 minus probability of A. ठीक है. So इसका आप आंसर इसे कैलकुलेट कर सकते हो and you will realize the answer that you get is which is 0.0021. Right? So ये correct answer है. So main thing here to realize is सैम्पलिंग करने के बाद जो भी हमने ऑब्जर्व किया रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, इवन दो हमने कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ऑब्जर्व की, बट since the entire experiment itself is a random, right? The whatever the statistic that you define on the corresponding samples that you achieve,
राइट, इट विल बी ऑल्सो रैंडम, राइट. यहाँ पे एस ऑफ ए रैंडम हो गया था, पी ऑफ ए सॉरी एन ऑफ ए इज ऑल्सो रैंडम, बिकॉज that is a statistic defined on the samples that you have observed. And since every time you do the sampling, the samples that you observe is different, so the corresponding statistic that you define is also random, right? So thank you very much for watching the video, and see you in the next video.